Hello all, this is Sonu Agrawal Todi and we are doing Gardener's theory of multiple intelligence. Okay, before we start, I'd like to tell you that Titular app is now available in Play Stores, so you all can download it from there, and don't forget to like, share and subscribe Titular. Thank you. Let us start. Theory of multiple intelligence. Okay, and this is the theory by Gardner. This theory suggests that traditional psychometric views of intelligence are too limited. Gardner first outlined his theory in his 1983 book Frames of Mind, the theory of multiple intelligence, where he suggested that all people have different kinds of intelligence. So all this thing, that is the theory of multiple intelligence, includes that we people, हम सारे इंसान में different types of intelligence है, सब एक बराबर नहीं होते हैं. Okay. Gardner proposed that there are 8 intelligences, and he has suggested the possible addition of the ninth, known as एक्सटेंशियलिस्ट इंटेलिजेंस. द नाइन्थ वाल वो उन्होंने बोला कि पॉसिबल है, ऐड कर सकते हैं, मगर 8 तो सब उन्होंने पूरा का पूरा सबके पास होता ही होता है बोल के प्रपोज किया है. ओके, नाइन्थ वन इज एक्सटेंशियलिस्ट इंटेलिजेंस. ओके, एक्सटेंशियलिस्ट इंटेलिजेंस नाइन्थ उन्होंने बोला पॉसिबल है तो ऐड कर सकते हैं, वरना इट्स 8 इज important. While a person might be particularly strong in a specific area, such as musical intelligence, he or she must likely possess a range of abilities. For example, an individual might be strong in verbal, musical, and naturalistic intelligence. So, कोई भी person, अब एक person किसी भी फील्ड में बहुत बढ़िया, कोई स्पोर्ट्स में बढ़िया होता है, कोई म्यूजिक में, कोई ड्रामा में, राइट, सिंगिंग, डांसिंग. सो हमारा ऐसा नहीं कि सबको सब चीज आता हो. हर इंसान का एक नेचुरल गिफ्ट होता है जिसमें वो एक्सेल करते हैं. ठीक है, हियर गार्डनर इज ऑल्सो टेलिंग अस दैट वी हैव 9 and 8 इंटेलिजेंस, जिस सबके पास होता है ये डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस. ओके, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट दोज इंटेलिजेंस ओनली इन हिज थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस. गॉट इट? Now, what are these 8 intelligences that Gardner is talking about in his theory? So, the 8 intelligences are these intelligences. One by one, we will know about all these. Okay, Gardner believed that 8 abilities meet these criteria. So, what are those 8 abilities that meet the criteria of Gardner's theory, multiple intelligence? They are spatial, linguistic, logical, mathematical, body kinesthetic, musical, interpersonal, intrapersonal, and naturalistic. So these are the 8 points, 8 places of intelligence where Gardner is giving us a broadened information. Okay, he considers that existential intelligence may also be वर्दी ऑफ इंक्लूजन. वो 9th जो बोला था ना, एक्सटेंशियल इंटेलिजेंस, तो गार्डनर बोल रहे हैं कि ये भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, ये भी इट कैन बी ऑल्सो वर्थ इंक्लूडिंग इन दिस 8 एबिलिटीज बोल रहे हैं. ठीक है, द फर्स्ट 3 आर क्लोजली लिंक्ड टू फ्लूइड एबिलिटी and the verbal and spatial abilities that form the hierarchical model of intelligence. So the first 3 are closely linked. That means the first 3 is spatial, linguistic, and logical, mathematical are fluid ability. That is very important. Okay, तीनों हमारा interlinked है. And the verbal, spatial and spatial abilities that form the hierarchical model of intelligence. So ये verbal, ये बोलने में, और spatial abilities model जो intelligence का, multiple intelligence का, इसका hierarchy model है, that is the basic model है. ठीक है, now let us see the first one, that is the spatial model. What is it? We will come to know. And ये किन किन fields में लागू होता है, कैसे कैसे लोग इस intelligence के अंदर आते हैं, ये भी हम लोग जानेंगे. Who are the person who belong to this intelligence? Okay, this area deals with spatial judgment and the ability to visualize with the mind's eye. Careers which suit those with this type of intelligence include artists, designers, and architects. A spatial person is also good with puzzles. Spatial ability is one of the 3 factors beneath
in the hierarchical model of intelligence. So here spatial model के लिए क्या चीज आपके पास होना चाहिए? जो आप spatial intelligence के अंतर्गत आओगे तो आप का जो माइंड्स आई है, जो आप विजुअलाइज आप देख सकते हैं, उसमें आप देख कर यू कैन मेक जजमेंट ऑन इट कि भाई ये इस तरीके का है, ऐसा करना चाहिए, या ये स्ट्रोक ऐसा जाए. जैसे इन ऐसे लोग इस कैटेगरी में आते हैं जो कि आर्टिस्ट्स होते हैं. ओके ये लोग भी तो आंखों से देखकर ही आपको देखकर ही पूरी आपको पेंटिंग बना स्केच कर देते हैं, राइट. डिजाइनर्स है, आपको ध्यान में रखते हुए आपके लिए डिजाइन कर सकते हैं, इधर आपके आउटफिट हो या आपका घर हो, isn't it, an architects. So all these people are using their mind's eye to गिव देयर लर्निंग. ओके उनके लर्निंग्स को अपने माइंड के आई थ्रू ये आपको प्रेजेंट करता है. सो दिस टाइप ऑफ पर्सन, दैट इज आर्टिस्ट, डिजाइनर, आर्टिस्ट, बिलोंग टू दिस स्पेशल कैटेगरी और स्पेशल इंटेलिजेंस ग्रुप. लिंग्विस्टिक, नेक्स्ट इज लिंग्विस्टिक. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिंग्विस्टिक? लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, ठीक है. द वर्ड लिंग्विस्टिक मीन यू आर वी आर वेरी गुड इन लैंग्वेज, ठीक है. दिस एरिया हैज टू डू विथ वर्ड्स spoken or written. So मैंने कहा ना लैंग्वेज से रिलेटेड है, सो इट्स वर्ड्स, राइट. लैंग्वेज में चाहे इंग्लिश, हिंदी, कोई भी आपके वर्नाकुलर हो, मदर टंग हो, उस वर्ड्स में स्पोकन एंड रिटन आपका कमांड बहुत बढ़िया हो, तो you are a very linguistic person there. Okay, people with high verbal linguistic intelligence display a facility with words and languages. अब आपका लैंग्वेज में बहुत अच्छा कमांड है, आप बहुत अच्छे लिख सकते हैं, बोल सकते हैं. दैट मीन्स यू हैव अ वेरी गुड लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस. ओके दे आर टिपिकली गुड एट रीडिंग, writing, telling stories and memorizing words along with dates. So इस तरीके का लोगों में आपको क्या मिलेगा? इस तरीके के लोगों में आपको ये दिखेगा कि they are very good at reading, writing, telling stories, memorizing words and dates. So this type of children are very very good with dates also. Okay, linguistic kind of intelligence जिसके पास बहुत ज्यादा होता है, ठीक है. They tend to learn best by reading, taking notes, listening to lectures and by discussing and debating about what they have learned. मतलब ये कैसे लर्न करते, कैसे सीखते हैं? ये सीखते हैं रीड करके, खुद ब खुद रीडिंग करके, या जो भी आप पढ़ा रहे हो उसके नोट्स लेके, आपके लेक्चर्स को सुनकर, या फिर जो भी उन्होंने सीखा है आज दिन भर उसे डिस्कस और डिबेट के तौर पर एक दूसरे से करके वो सीखते हैं, ठीक है. लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट पीपल. Those with verbal linguistic intelligence learn foreign languages very easily as they have high verbal memory and recall and an ability to understand and manipulate syntax and structures. सो ऐसे जिनका लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत हाई होता है, वो फॉरेन लैंग्वेजेस बहुत आसानी से सीख लेते हैं, क्योंकि उनके कमांड जो होता है ना वर्बल में, मेमोराइज करने के लिए, याद करने की क्षमता, जो वर्ड्स को और जो प्रोनाउंसिएशन यूज होगा, ये सब बहुत ज्यादा एबिलिटी होते हैं इन लोगों के पास जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है. सो दैट इज वाई दीज काइंड ऑफ पीपल आर ईदर वेरी गुड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस और वेरी गुड विद वर्ड्स. इधर ये तो राइटर्स, ऑथर्स, पोएट, ये सब रहते हैं, ठीक है. सो verbal ability is one of the most G-loaded ability. So verbal ability is also one of the most important ability which is needed for a person to be included in this multiple intelligence group. Okay, next is logical and mathematical. So here this is the third one, right? So logical and mathematical intelligence मतलब क्या है? This area has to do with logic, abstractions, reasoning and number and critical thinking. So logical mathematical मतलब इस एरिया में जो भी बिलोंग करते हैं उनका लॉजिक, एब्स्ट्रैक्शन, रीजनिंग, नंबर एंड क्रिटिकल थ्योरी में बहुत बहुत बेहतरीन होते हैं. While it is often assumed that those with this intelligence naturally excel in mathematics, chess, computer programming, and other logical and numerical activities, a more accurate definition places less emphasis on traditional mathematical ability and more on reasoning capabilities. So, reasoning, abstract patterns, scientific thinking, and investigations, and the ability to perform complex calculations. Okay, so यहाँ पे जैसे बोला गया ना लॉजिकल मैथमेटिक्स, तो इस तरह के जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स या लोग होते हैं वो नेचुरली ही मैथमेटिक्स में बहुत बढ़िया होते हैं,
ठीक है। उनके मतलब जीन्स में कह लीजिए या उनको अंदर से ही मैथ्स बहुत बढ़िया से आता है, एंड दे आर वेरी गुड चेस प्लेयर्स। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी बहुत बढ़िया वो कर लेते हैं, बिकॉज दे माइंड उस तरह से उनका प्रोग्राम रहता है, वो इतने अच्छे इंटेलिजेंट होते हैं लॉजिकल मैथमेटिक्स में कि उनका ये सब चीज़ों में बहुत बढ़िया योगदान रहता है, ठीक है। अदर लॉजिकल और न्यूमेरिकल एक्टिविटीज, एंड they say that this kind of people who are very good in logical mathematical intelligence, they are very scientific kind of a thinkers, and उनको scientific thinking या investigate करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी आसानी से कर लेते हैं वो लोग, ठीक है, जिनका लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इंटेलिजेंस कि 8 तरह के इंटेलिजेंस होते हैं, 8 तरह के इंटेलिजेंस होते हैं, और हर इंटेलिजेंस हर इंसान के अंदर नहीं होता। एक इंटेलिजेंस या 2 इंटेलिजेंस खूबी जो है वो एक या 2 खूबी सब इंसानों के अंदर होते हैं, एंड क्या खूबी है उसी के बारे में हम आज बात कर रहे हैं, राइट। सो अभी तक हमने 3 कर लिया है, अब आगे देखते हैं द 4th वन, दैट इज बॉडीली kinesthetic intelligence. Okay, now what is this bodily kinesthetic intelligence? The core elements of the bodily kinesthetic intelligence are control of one's bodily motion and the capability to handle objects skillfully. So अपने बॉडी को कितने कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे हैंडल कर सकते हैं खुद की बॉडी को with a perfect posture and perfect performance, that is known as bodily kinesthetic. Gardner elaborates to say that this intelligence also includes a sense of timing, a clear sense of goal of physical action, along with the ability to train responses so they become like reflexes. So गार्डनर ये भी बोलते हैं कि हमारा बॉडी को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, अपने बॉडी को कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये तो होगा इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो इंसान ये बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंट में माहिर है, बहुत खूबी है उनको, दे हैव अ सेंस ऑफ टाइमिंग ऑल्सो, कितने टाइम में हमारा कितने पोस्चर हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लीजिए आप एक डांसर है, तो म्यूजिक के हर बीट के साथ उसके डांस स्टेप्स चेंज होते रहते हैं ना, तो दे नो कितने टाइम के अंदर उनको पोस्चर चेंज करना है, कितने टाइम के अंदर उनको डिफरेंट पोज डिफरेंट स्टेप्स करने हैं। तो दैट इज व्हाट इट मीन्स, दैट सेंस ऑफ टाइमिंग होता है, अपने बॉडी को ठीक उसी तरह से वो लोग हैंडल कर पाते हैं, ठीक है। अ क्लियर सेंस ऑफ गोल ऑफ फिजिकल एक्शन। नाउ इफ यू आर स्पोर्ट्समैन, आपको अपने बॉडी को हैंडल करना तो आएगा ही आएगा, एंड यू हैव टू हैव अ गोल ऑफ फिजिकल एक्शन, कितनी ताकत मुझे झोंकना है इसमें, कितना ताकत मुझे बचा के रखना है। that sense of action also is very high in this kind of a person. Okay, and इतना मतलब करते करते इतना ज्यादा ये माहिर हो जाते हैं कि मतलब हम लोग जैसे ना कोई चीज गिरने वाला तो हम लोग फटाक से पकड़ लेते हैं ना, जैसे वी सी अ फ्लावर वाज फॉलिंग डाउन, तो हमारे रिफ्लेक्सेस इतने जल्दी काम करते हैं कि उसको पकड़ने लगते हैं। बॉल आपकी तरफ आप देख नहीं रहे हो, लेकिन बॉल आपकी तरफ आते हैं तो आपके रिफ्लेक्सेस तुरंत काम करते हैं, आप पकड़ लेते हो बॉल को, राइट। वैसे ही ये लोग इतने खूब होते हैं अपने इस खूबी में, इतने दे आर वेरी गुड एट देयर इंटेलिजेंस कि उनको जो भी रिस्पॉन्स करना होता है या जो भी एक्शन करना होता है, ये रिफ्लेक्सेस तरह अचानक से भी कर सकते हैं, इतने मतलब ट्रेंड हो जाते हैं ये। ओके, in this theory, people who have bodily kinesthetic intelligence should learn better by involving muscular movements. Example, getting up and moving around into the learning experience, and are generally good at physical activities such as sports or dance. They may enjoy acting or performing, and in general, they are good at building and making things. They often learn best by doing something physically rather than by reading or hearing about it. So, जो students या जो learner bodily kinesthetic इंटेलिजेंट होते हैं, उनका क्या है ना, वो बैठ के पढ़ के एक जगह टिक के पढ़ के या सोच के वैसे वो पढ़ाई नहीं कर सकते, राइट। उनको लर्न कैसे, उनका लर्निंग कैसे होता है, उनका लर्निंग होता है व्हेन दे डू द एक्टिविटीज, हिलते हैं ना, उठ बैठ करके इधर उधर हाथ पैर चला के वो सीखते हैं। ओके, इट इज नॉट दैट एक जगह बैठ के रीड कर रहे हैं एंड उनको हो जाएगा, वो ऐसा नहीं होता है। द स्टूडेंट्स हु आर इंटेलिजेंट विद बॉडली काइनेस्थेटिक, जिनका बॉडली काइनेस्थेटिक जो ये इंटेलिजेंस है वो बहुत हाई होता है, एक्टिव होता है, वो ऐसा एक जगह बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते। दे हैव टू डू मेनी फिजिकल वर्क टू लर्न, मतलब लर्निंग बाय डूइंग जो कहते हैं ना, वो इनके ऊपर लागू होता है, ठीक है। They often learn best by doing something physically. See, I said na, learning by doing, so they learn best by doing something
physically rather than by reading or hearing about it. Those with strong bodily kinesthetic intelligence seem to use what might be termed muscle memory, drawing on it to supplement or in extreme cases even substitute for other skills such as verbal memory. So ये ना muscle memory को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, right? Bodily kinesthetic intelligence वाले अपने दिमाग में ही ये ना सारा ड्राइंग कर लेते हैं कि ऐसे करना है वैसे करना है. आप स्टेप्स भी अगर याद करना आपको डांस के तो दिमाग में पूरा उनका स्टेप्स ड्रॉ हो चुका था. वर्बल मेमोरी से ज्यादा इनका मसल मेमोरी ज्यादा काम करता है. दे आर वेरी एक्टिव विद इट. ओके, करियर जो इस टाइप के बॉडली काइनेसिटिक इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट्स लर्नर्स इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उनको किस तरह के करियर चॉइस करना चाहिए. दैट इज Career that suit those with these intelligence include athletes, pilots, dancers, musicians, actors, surgeons, builders, police officers, and soldiers. Although these careers can be duplicated through virtual simulation, they will not produce the actual physical learning that is needed in this intelligence. Virtually, ये अगर आप इसको virtually सिखाना चाहो तो भी वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जो कि ये फिजिकली खुद करके सीख सकते हैं, राइट. तो सो व्हेन यू हैव टू टीच समथिंग टू दिस बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंट टाइप ऑफ लर्नर, तो आपको उन्हें फिजिकल एक्टिविटी देना बहुत जरूरी हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज म्यूजिकल. दिस एरिया हैज टू डू विद सेंसिटिविटी ऑफ साउंड, रिदम, टोन्स एंड म्यूजिक. ये तो जैसे हम लोग सब जानते हैं ना, क्या म्यूजिक के लिए तो सबको पता ही होता है. तो हम लोगों को इसमें बहुत ज्यादा रिदमेटिक होना चाहिए, साउंड, टोन्स एंड म्यूजिक के ऊपर बहुत ज्यादा हमारा ज्ञान होना चाहिए, राइट. पीपल विथ हाई म्यूजिकल इंटेलिजेंस नॉर्मली हैव गुड पिच and may even have absolute pitch and are able to sing, play musical instruments and compose music. So as the topic itself is musical, so obviously इस कैटेगरी में वही लोग आएंगे जिनका म्यूजिक की तरफ बहुत ज्यादा रुझान है, राइट. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बढ़िया बजाते हो या कंपोज कर सकते हो सॉन्ग म्यूजिक को, या फिर बहुत बढ़िया वॉइस हो, तो वो इस म्यूजिकल इंटेलिजेंट है बोल के हम easily उसको पहचान जाते हैं, right. Since there is a strong auditory component to this intelligence, those who are strongest in it may learn best via lecture. Language skills are typically highly developed in those whose base intelligence is music. सो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जिसको आप देखते हैं ना कि उसका म्यूजिक की तरफ बहुत ज्यादा रुचि है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, उस तरह के लर्नर को आप कैसे सिखा पाओगे. इट इज वाया लेक्चर. तो उन्हें लेक्चर मीडियम से आप उनको लर्न करवा सकते हो, बिकॉज उनका जो ग्रास्प करने का, जो उनको पकड़ने का जो क्षमता होता है ना आपके वर्बल को या आपके वर्ड्स को, वो बहुत हाई होता है, वो बहुत हाईली डेवलप होता है. बिकॉज दे कैन सिंग, दे कैन अंडरस्टैंड द म्यूजिक, पिच वगैरह समझते, लैंग्वेज समझते हैं, राइट. दे आर कंपोजिंग म्यूजिक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे, तो दे कैन अंडरस्टैंड द वर्ड्स very nicely. So language skill are typically highly developed in those kind of intelligent children or students. Okay, so उनको वो सिखाने के लिए आप lecture medium use कर सकते हैं. In addition, they will sometimes use songs or rhythms to learn, right. जब हमें कोई चीज याद नहीं हो रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, उसका एक छोटा सा सॉन्ग टाइप का कुछ वर्जन बना के एंड देन उसको गुनगुनाने लगते हैं, तो तुरंत याद होता है, राइट. बच्चों को भी, अगर स्मॉल बच्चों को आप देखते होंगे कि टीचर्स जनरली छोटे क्लास के बच्चों को आंसर्स भी ना सॉन्ग टाइप में लर्न करवा रहे होते हैं, राइट, क्लासेस में. सो दैट इज म्यूजिकल लर्निंग, क्योंकि म्यूजिक बहुत जल्दी हमारे दिमाग में घुसता है, हम बहुत जल्दी उसे आसानी से समझ लेते हो, वो ट्यून में इतने जल्दी ढल जाते हैं, हमें याद हो जाता है, राइट. सो सॉन्ग्स को, रिदम्स को हम लोग बहुत ज्यादा लर्न कर सकते हैं, बहुत क्विकली लर्न कर सकते हैं. दे हैव सेंसिटिविटी टू रिदम, पिच, मीटर, टोन, मेलोडी और टिम्बर. ओके, करियर दैट सूट्स विद दिस इंटेलिजेंट इंक्लूड्स इंस्ट्रूमेंटलिस्ट्स, सिंगर, कंडक्टर्स, डिस्क जॉकी, orators, writers and composers. So we are talking about, along with the intelligence, we are talking about the careers also that these type of intelligent student can choose. Okay, next is interpersonal. Now this area has to do with interaction with others.
Interpersonal, as the word itself means, inter means एक दूसरे के साथ, right? So interpersonal means एक इंसान दूसरे इंसान के साथ जो इंटरैक्ट करेंगे, वहां से जो लर्निंग होगा, that is called interpersonal. Now see this space, I'm giving this stress on this inter, ter, inter मतलब एक दूसरे के साथ. Okay, this area has to do with the interaction with others. Interpersonal intelligence is the ability to understand others, right? जैसे मैंने कहा ना कि एक दूसरे को समझना चाहिए, तो ability to understand others. In theory, individuals who have high interpersonal intelligence are characterized by their sensitivity to others' moods, feelings, temperaments, and motivation, and their ability to cooperate in order to work as part of a group. So when we are understanding other people, when we can have a good knowledge of understanding others' moods, intelligence, feelings, what is the temperament, right? उनके emotions को समझ सकते हैं. And those kind of children or learners are very good at working in a group. Okay. According to Gardner, in How Are Kids Smart? Multiple Intelligence in Classroom, inter and intrapersonal intelligence is often misunderstood with being extroverted or liking other people. Okay, interpersonal intelligence means that one understands what people need to work well. Individuals with this intelligence communicate effectively and empathize easily with others and may be either leaders or followers. They typically learn best by working with others and often enjoy discussing and debate. So यहाँ पे जो inter and intrapersonal intelligence में जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, उसका क्लियर किया गया है. इंटरपर्सनल मतलब जो ये इंटरपर्सनल मतलब एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन करके समझ होना होता है, और इंट्रापर्सनल मतलब आपके अंदर के खुद को. ओके, इंटर मतलब दूसरे लोगों के साथ, एंड इंट्रा मतलब अपने आप को, अपने अंदर को, अपने खुद को समझना. ठीक है. So here when people are very highly interpersonal, INTER, interpersonal, then these people can work in different fields in a group. Okay, either they can be leaders or followers, and what do they like? They like to discuss and debate. Okay, and the career that suits those with this intelligence includes sales, politicians, managers, teachers, counselors, and social workers. Okay, next is intrapersonal. This is the word intrapersonal. अभी पहले जो हमने किया वो था इंटर, INTER, ये है INTRA, इंट्रापर्सनल. ओके, दिस एरिया हैज टू डू विद इंट्रोस्पेक्टिव एंड सेल्फ रिफ्लेक्टिव capabilities. This refers to having a deep understanding of self, with what your strengths, weaknesses are, what makes you unique, being able to predict your own reactions, emotions. Got it? So मैंने बोला ना, खुद को समझना, अपने अंदर को समझना, that is what is called as intrapersonal, जहाँ पे आप अपने आप को बहुत अच्छे से समझते हो. आप अपने स्ट्रेंथ्स, खूबी को, अपने वीकनेसेस, कमजोरी को समझते हैं. कहाँ आप बहुत बढ़िया, बेहतरीन है, आप यूनिक है, सबसे अलग है, एंड कहाँ पे आपको अपने ही रिएक्शंस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आपके इमोशंस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं. दैट इज व्हाट, व्हेन यू कैन प्रेडिक्ट योरसेल्फ, आप अपने आप को बहुत अच्छे से समझते हो, दैट मीन्स यू आर अ इंटरपर्सनल, INTRA, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंट पर्सन. Okay, philosophical and critical thinking is common with this intelligence. When you are an intrapersonal intelligence, then philosophical and critical thinking is very common with you. A philosophical way में think करते हैं, critical thinking करते हैं, and that will be a very common stage or a common intelligence in that kind of a person with interpersonal qualities. Okay, many people with this intelligence are authors, psychologists, counselors, philosophers, and members of clergy. Clergy मतलब चर्च में जो हायर पोस्ट में जो पोस्ट में जो काम करते हैं ना, उन्हें क्लर्गरी कहते हैं. सो दीज काइंड ऑफ पीपल विद इंटरपर्सनल कैन बी मेक द करियर्स एज ऑथर्स, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, फिलोसोफर, एज वेल एज मेंबर ऑफ क्लर्गरी ऑल्सो. ओके,
Now comes the naturalistic part. What is naturalistic part? Now let us see what is naturalistic intelligence. Naturalistic intelligence means this area has to do with nurturing and relating information to one's natural surrounding. अपने सराउंडिंग के अनुरूप आप अपने आप को कैसे ढालते हो, कैसे रिलेट करते हो, that is a naturalistic intelligence. Example includes clarifying natural forms such as animals and plant species and rocks and mountain types, and the applied knowledge of nature in farming, mining, etc. Career which suits those with these intelligence includes naturalists, farmers, gardeners, etc. अगर आपको अपने सराउंडिंग नेचर के बारे में पता है, बहुत अच्छी जानकारी है, आप जानते हो, तो यू कैन बी बहुत अच्छे आपका करियर हो सकता है इन फार्मिंग, माइनिंग, बिकॉज यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द नेचुरल सराउंडिंग दैट यू आर इन, एंड वो अपने आप में ही आप उसको अपने अपने आप में नर्चर करा सकते हैं, अपने आप में ढाल सकते हैं उसको, आपको ज्ञान को अपने करियर में निकाल सकते हैं आप. सो यू हैव टू सी फाइंड आउट which learner has what kind of intelligence. Gardner has given us 8 to 9 intelligence, जिसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस बोल के उन्होंने बताया है. तो दीज आर डिफरेंट इंटेलिजेंस, और हमने हर एक इंटेलिजेंस को एकदम अच्छे से डिस्कस किया है. इसका करियर फील्ड भी हमने बताया है. सो आई थिंक सो दिस इज मच मोर क्लियर विथ यू ऑल नाउ, राइट? नाउ एक्सटेंशियल, दिस इज द 9th वन, जिसमें गार्डनर ने बोला था कि 8 तो है ही मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंदर, 9th भी हम ऐड कर सकते हैं, एंड दिस वन इज द 9th वन. ओके, इसको भी हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं. एक्सटेंशियल, some proponents of multiple intelligence theory propose spiritual or religious intelligence as possible additional type. So किसी ने other philosophers also propose that आपने इतने सारे मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात किया, तो स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस इंटेलिजेंस भी तो हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं अपने मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंदर. ये दूसरे फिलोसोफर्स ने इन गार्डनर को प्रपोज किया, बताया, राइट? इन्होंने कहा गार्डनर डिड नॉट वांट टू commit to a spiritual intelligence but suggested that an existential intelligence may be useful construct. So उन्होंने कहा कि भाई मैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन हाँ एक्सटेंशियल इंटेलिजेंस को ऑब्वियसली मैं उसको मल्टीपल इंटेलिजेंस में इंक्लूड करना चाहूंगा, बिकॉज इट कैन बी अ वेरी गुड कंस्ट्रक्ट, एक बहुत बड़ा फाउंडेशन ये भी साबित हो सकता है, उन्होंने ये कहा था. The hypothesis of an existential intelligence has been further explored by educational researchers. Now, educational researchers ने existential intelligence को और अपने ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, एक hypothetic way में भी इसे explore किया है. ठीक है, different educational researchers ने. Ability to contemplate phenomena or questions beyond sensory data, such as the infinite and infinitesimal. Careers or calling which suit those with this intelligence include shamans, priests, mathematicians, physicists, scientists, cosmologists, psychologists, and philosophers. So here, why is this existential intelligence actually not added and is only in the purpose of मतलब propose किया गया था? Because इसमें hypothetic way में इसको सोचना and एक सेंसरी डाटा के ऊपर काम करना, फिनिट इन्फिनिट टाइप में इसको काम करना होता है. इसीलिए द करियर्स दैट अ लर्नर और अ स्टूडेंट कैन opt with this kind of intelligence, that is shamans or priests, mathematicians, physicists, scientists, psychologists, cosmologists, and philosophers. Okay, use stronger intelligence to understand the content of any topic. So यहाँ पे जब हम ये एक्सटेंशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो हम एकदम स्ट्रॉन्गर इंटेलिजेंस चाहिए होता है कंटेंट ऑफ एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक के कंटेंट को समझने के लिए. फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, तो वो फिजिक्स के किसी भी टॉपिक को समझने के उसका कंटेंट को बहुत बारीकी से समझना होता है. व्हेन यू आर अ साइंटिस्ट,
ऐसे कोई साइंटिस्ट नहीं बन जाता. द साइंटिस्ट हैव अ वेरी डीप नॉलेज अबाउट एनी टॉपिक, राइट. सो उस टॉपिक के अंदर आपको बहुत डीप नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है. देन ओनली यू आर in the category of extensional intelligent group. Okay, teachers should structure the presentation of materials in a style which engages most of all these intelligence. So जब हम टीचर बनते हैं तो हमें ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे हर तरीके का होते हैं क्लास के अंदर. हमारे क्लास के अंदर सिर्फ स्पैचुअल या सिर्फ नेचुरलिस्टिक या सिर्फ म्यूजिकल बच्चे नहीं होते हैं. हमारे क्लास के अंदर डिफरेंट वैरायटीज के बच्चे विद डिफरेंट इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस होते हैं. सो व्हेन वी आर कंस्ट्रक्टिंग एनी काइंड ऑफ कंटेंट और अ material for the students, we have to take into consideration that we are engaging each and every type of children in there, because there are multiple intelligence inside your class, right? Teachers must seek to access their students' learning in ways which will give an accurate overview of their strengths and weaknesses. So when you are a teacher, you must access the students' learning ways. आपको बच्चों के लर्निंग वेज को बखूबी से समझना चाहिए, एंड देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड कि इस बच्चे में क्या खूबी है और किस बच्चे में किस चीज की वीकनेस है. गॉट इट? सो सी हियर नाउ वी हैव अ दिस इज इन द एक ये छोटा सा एक डायग्राम है, सच एज इंटरपर्सनल मतलब सेल्फ स्मार्ट. हम अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं. दैट मीन्स वी आर वेरी वेरी intelligent, we are self smart. These are multiple intelligence. Okay, we are talking about the multiple intelligence. और जितना भी हम लोग अभी डिस्कस किया था वो सभी को एक डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाह रही हूँ. मल्टीपल इंटेलिजेंस, एंड व्हाट आर दीज मल्टीपल इंटेलिजेंस? फर्स्ट देख रहे हैं इंटरपर्सन, दैट मीन्स सेल्फ स्मार्ट. वी आर सो स्मार्ट. वी आर हम अपने आप को इतने बढ़िया से जानते हैं कि हमारे लिए जो अच्छा है वो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. ओके, एक्सटेंशियल डीप क्वेश्चन स्मार्ट मतलब एकदम बहुत बारीकी से किसी चीज को समझना, उस तरीके का स्मार्ट है हम. विजुअल स्पैशियल, दैट इज पिक्चर स्मार्ट. क्या देख रहे हैं, देख कर सीख रहे हैं हम, राइट. बॉडली काइनेस्थेटिक, दैट इज बॉडी स्मार्ट. हमारा बॉडी के ऊपर हमारा कमांड बहुत अच्छा है. वी कैन हैंडल अ बॉडी बहुत बढ़िया तरीके से. दैट वाई वी आर बॉडी स्मार्ट. इंटरपर्सनल, पीपल स्मार्ट मतलब एक दूसरे से बहुत अच्छे इंटरैक्ट कर सकते हैं हम, राइट. एंड देन कम्स वर्बल और लिंग्विस्टिक, दैट इज वर्ड स्मार्ट. वर्ड के लिए वो कैसे भी वर्ड्स के साथ खेल सकते हैं. दे आर सो स्मार्ट विद द वर्ड्स. लॉजिकल एंड मैथमेटिकल, लॉजिक स्मार्ट. हियर दे आर वेरी वेरी क्लियर विथ मैथमेटिक्स एंड दोज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग्स और different scientific formulas, right. So they are logical or mathematical, that is logic smart. Now musical मतलब music smart, right, and naturalist मतलब nature smart. So this इस तरीके से ये पिक्चर के माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कौन सा इंटेलिजेंस किसके ऊपर कैसा बच्चा होगा. Okay, and these are also three types, that is analytical, and these are introspective and introspective. Okay, now this is just this is just a एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आए हैं. सच एज सी इंटेलिजेंस, यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दिया गया है आपको. करियर पाथ पहले भी मैंने बताया था, यहाँ पे भी मैं बताऊंगी. एंड लर्निंग स्टाइल की वो कैसे बच्चे उस जिस टाइप के इंटेलिजेंस है बच्चों में वो बच्चा किस तरीके से पढ़ सकता है. ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. सपोज अ स्टूडेंट और लर्नर इज स्पैशियल और विजुअल इंटेलिजेंस. द करियर ही चूजेज इज आर्टिस्ट और आर्किटेक्ट्स. ये एक दो ही लेके आया बिकॉज ऑफ दिस प्लेस, राइट. तो मैं दो ही इसमें बता रही हूँ. देयर मेनी अदर्स ऑल्सो. आगे हमने ये डिस्कस किया था. एंड हाउ डू दे लर्न? द लर्निंग स्टाइल इज विजुअल लर्निंग, देख के सीखते हैं, राइट. बॉडीली काइनेस्थेटिक में क्या होता है? द करियर पाथ दे चूज इज एथलीट, पुलिस ऑफिसर, एक्टर, राइट. एंड हाउ डू दे लर्न? आइडियाज बेस्ट एक्सप्रेस थ्रू मूवमेंट. मूव करते हैं अपने बॉडी को एक्शन के थ्रू, ये अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं, राइट. म्यूजिकल, नाउ म्यूजिकल composer, disc jockey, singer, they can be, right, music composers, right. So how do they learn? Listening, creating rhythms and patterns. So this is the way how they learn.
Next is linguistic. Linguistic word ka mahir, right? So they can be journalism or politics that the student can choose as a career, and their learning style is good written and oral skill, right? Naturalistic जो इंटेलिजेंस है उसमें करियर पाथ आप चूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी एंड द लर्निंग स्टाइल इज लर्निंग मेक कनेक्शन with connection where the content interacts with the natural world. So जब हमारा learning natural world के साथ interact होता है तब हम इसको समझ सकते हैं with the people of naturalistic intelligence. Okay, logical and mathematics, you can choose a career for mathematics, either mathematics engineer, right? And tangible projects most likely involving numbers, so they learn through tangible projects. Okay, इंटरपर्सनल इज इंटरपर्सनल मतलब एक दूसरे के साथ, राइट? सो वहां पे आप क्या करियर पाथ चूज कर सकते हो? इट्स काउंसलिंग, सेल्स पीपल, मैनेजर्स, टीचर्स ऑल्सो, राइट? सो इंटरैक्ट वेल विद सोसाइटी एंड लेबल्ड एज टॉकर्स, राइट? द लर्निंग स्टाइल इज दैट. इंट्रापर्सनल जो अपने आप को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, अपने काम को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. द करियर पाथ दे चूज आर रिसर्चर्स, राइटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स. सेल्फ मोटिवेटेड व्हेन हु लर्न विद मेटा कॉग्निटिव प्रोसेसेस. ठीक है, बहुत ज्यादा खुद को मोटिवेट करते हैं और कॉग्निटिव अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पे काम करते हैं, सीखते हैं. Then comes existentialist, that can be philosophers, anthropologists, okay, focuses on big picture and how the world works. So these existentialists are always in a big frame. They think of big and they always are learning through how the world works. बहुत इन डेप्थ ज्ञान रहता है इन एक्सटेंशियलिस्ट इंटेलिजेंस वाले लर्नर्स के अंदर. ठीक है, so this much for today. Thank you, and don't forget to download Dive to Love from Play Stores. Thank you.